Hello, everyone. Oh, wow. I'm boomy. Welcome to the National Indo-American Museum. My name is Chrissy Bergmark. I am the program manager at NIAM, and this is my very first program that I'm putting on and hosting. So thank you so much for being here, and it's wonderful to see all of your faces. Oh, thank you. Thank you. Well, okay. I also have to say thank you for your patience. I know there's been a few snafus, so thank you for your patience and generosity. So I want to read to you a little bit about some of the artists that we're featuring tonight. This is such an exciting event. We've got visual art, we've got beautiful dance, we've got spoken word, poetry. It's just an amalgamation of so many beautiful art forms that we're very excited to host. So we're going to be featuring the visual art of Prem Sharma. And Prem Sharma has worked tirelessly for a span of 4 decades to serve the Indian community of Chicago, leaving a legacy of hope through the institutions she founded and endowed. She's the creative force behind social and cultural awareness amongst the South Asian community. While serving in many leadership roles, she has always strived to keep the Indian community ever growing and vibrant. Whether it is to organize a youth festival, a beauty pageant, a Meena Bazaar, or to host the show on Chitrahar, she was always willing to take the lead to lift them off the ground, as she did with Woman Made Gallery, the Indo-American Heritage Museum, and when Alsorf Gallery at the Art Institute of Chicago required help. Prem, as an artist, has supported the arts and culture in Chicago. She was appointed as a member by the governor to represent Asian Indians on the Illinois Arts Council and the Governor's Advisory Council on Asian Affairs. She is the co-founder of the Club of Indian Women, and establishing the 24 Hours Indo-Crisis line in 1983 was a bold step she took in the face of considerable resistance, even hostility from the Indian immigrant community, which was more comfortable with denial than face the reality of domestic violence. However, Prem Sharma is most known for helping create Apna Ghar, Our Home, in 1989, an agency that provides services and shelter for women and children of South Asian descent. Since its beginning, Apna Ghar has become a shining example of how community outreach can make a lasting difference and has become one of Prem's finest accomplishments as its co-founder and current alumni board member. She is the recipient of several community awards for recognizing the challenges faced by immigrant Indians and for her unwavering commitment to serving the diverse needs of the Indo-American community. While married to Dr. Umesh Sharma for 53 years, who she met on her wedding day, she enjoys spending time with her daughter, Monica, a mom by choice, her son, Sandeep, his wife, Zankana, and her 3 grandkids. So we're very excited to be seeing some of Prem's beautiful artwork tonight. And now I want to tell you a little bit about Anaga, who is our dancer. Anaga Sundararajan is a dancer and choreographer currently based in New York City. Anaga's primary classical training is the Kalakshetra style of Bharatanatyam under Guru Sushmita Arun Kamar, but she has also trained in the Jaipur and Lucknow Gharanas of Kathak and Guru Gauri Yog, and in Odissi under Guru Moli Pal in Boston. Since 2011, Anaga has performed, choreographed, and taught both Kathak and Bharatanatyam across the Chicago area as an independent artist and with her collective Leela, and has conducted several workshops on classical Indian dance, including at the Field Museum of Natural History and the Rotary Club of Lake Forest. She's a graduate of the University of Chicago, where she served as an artistic co-director of Apsara, the university's classical Indian dance company, and as co-president of the University of Chicago Dance Council. In her spare time, Anaga practices law at a private firm in New York City. And then I wanted to tell you a little bit about Iqbal Patni. Iqbal Patni has developed a unique concept of tasveer ki awaz, fusion of poetry with different art forms such as art, dance, and fashion. The creative interaction of the concept of tasveer ki awaz, the voice of the images, is where the art of words meets the art of images to create a new dimension.
Not only does it allow the freedom to the poetry, but also become an alternate and mesmerizing way to look at a piece of art, which is lost while it rests on an easel or just hangs on the wall. Suddenly the paintings get a voice and the images start speaking for themselves. So now that I've given you a little background about the artists that you're going to see today, I would like to introduce Happy. And you all probably know Happy. She is the president of the board of the National Indo-American Museum. Welcome, Happy Bat. Thank you, Chrissy. Isn't it wonderful? What a wonderful job she did to set this up for this program. Thank you, Chrissy. Welcome to all of you. I see many old faces and many new faces. And I would sincerely, on behalf of the National Indo-American Board, to keep us in mind. If you take any pictures today, take them inside, outside, please post them on your social media sites and link it to us. We would really appreciate that. I'm going to read the rest. NIAM brings talent from Chicago. Classical Kathak dancer Anaga, as we heard, paintings by Prem Sharma, and paintings by Nita Maheshwari. Nita Maheshwari had a family obligation and could not be here, but her paintings will be here to represent her. Iqbal, our guest from India. This unique concept of tasveer ki awaaz is fascinating because so often when we go to an art gallery or a museum and we see or watch these paintings or we observe something, just rendering it through a different voice gives it a dimension that would be unbelievable. All of them started their journeys long ago, and they kept up their art while doing that. In Iqbal's words, this really struck me, so I would like to share this with you. In Iqbal's words, tasveer ki awaaz is when the art of words meets the art of images and motion to create a new dimension that in itself is art. These nazams, or single poems, which are written in simple Hindustani, become an alternative and mesmerizing way to look at a piece of art. Thank you all for coming, and you have the stage, Iqbal. Very good evening to you all, ladies and gentlemen. Yes, I'm using papers instead of a digital gadget because I still believe papers are the best form. But I'm not taking away the technology aspect of pads and iPads, but I prefer paperback. So, a very good evening to you. On the outset, let me thank National Indo-American Museum for giving me this opportunity to present my unique concept of Tasveer Ki Awaaz, the voice of images. I'm ever thankful to the President, Happy, and the members of the Executive Committee, especially to my childhood friend, Sami Siddiqui. I don't think he's here. He was the one who persuaded me and called me from Chicago to Hyderabad. Well, I live in Hyderabad and in India, and I've traveled a long distance for this event. And I must say the team of NIAM, especially Chrissy, has been so cooperative since the day this event was conceptualized. And a brief of what Tasveer Ki Awaaz is, the voice of images, is all about. It's a concept where I do fusion of poetry with different art forms, like painting, dance, and fashion. Today, I will try to express this fusion of poetry with three different art forms: visuals, painting, and dance. In today's event, I shall be reciting two poems using the artwork of two artists from Chicago, namely Nita Maheshwari ji and Prem Sharma ji. One poem on the artwork of a very famous painter of India, Mr. Lakshma God. And one poem I will be using visuals. But two particular poems today
I have my fellow artist, Anaga, who would be performing along with me. She would be doing Kathak, and the interaction I had with her during the course of these several weeks where we were practicing, I mean, I was sitting in India, she was in New York, Chrissy was in Chicago. But believe me, it was such an amazing thing that today, you know, the world has come into a small piece of device. So she's really worked very hard to get this act right. And I'm sure once you see her performance, I think she and Chrissy deserve a very loud round of applause for this piece. So I'm starting my program, Tasveer Ki Awaaz, with my first nazm, as Happy said. Nazm is a format, and there are different formats of writing, Hindustani and Urdu poetry. Nazm is one of them. It's called the free verses, where the thought is one, and then you start with that thought and you just keep on developing on that. The classic example of a nazm would be from a very famous Bollywood movie, Kabhi Kabhi, where Amitabh Bachchan recites, Kabhi Kabhi mere dil mein khayal aata hai. So that format of poetry is called nazm. This nazm titled Aurat. Now I firmly believe that the attributes of women in this world is far more greater than men, and I have absolutely no hesitation in showing so and acknowledging that. ये मेरा मानना है कि जब हम किसी औरत को देखते हैं तो हम उसकी खूबसूरती और उसके अंदाज़ को तो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे छुपी हुई उसकी ताकत और उसकी इज़्ज़त को बराबर देखना चाहिए. ये मेरा ट्रिब्यूट है, ट्रिब्यूट टू ऑल द वुमेन इन दिस वर्ल्ड. तो जितने भी औरतें इस वक्त यहाँ बैठी हैं, अपने औरत होने पे अब नाज करिए और एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए उसके लिए. So पहली नज़म वी स्टार्टिंग माई ट्रिब्यूट टू द women of this world, titled औरत. मैं वक्त हूँ और इस गूंज की आवाज़ हूँ. मेरे सफ़ों पे तेरा वजूद जाहिर हुआ और इसी दामन पर तेरे अनेक रूप जलवानुमा थे. तू इस कायनात की सबसे पुरअसर, दिलखुश और दिलचस्प इजाद है. तू औरत है, तू औरत है. तू कहीं नूर है तो कहीं जलवा, तू कहीं ख्वाब है तो कभी ताबीर, कहीं इंतहा तो कहीं जुस्तजू, कहीं हासिल तो कहीं आरज़ू, कहीं संग दिल तो कहीं नज़ाकत. कभी ख्याल बन के तू दिलों में उतर जाती है, कभी हर्फ बनकर सवाल बन जाती है, कभी कहानी बनकर किताबों में ढल जाती है. नाजुक अगर है तो गुलाब की तरह, इरादे
अगर मजबूत हो तो चट्टान की तरह। गंगा से उभरती है गर पाकीज़गी तेरी, तो जमुना में बहता है अक्स तेरा। पहले ही तेरे दामन में ये रिश्ते किस वक्त के, गुजरे है कई ज़माने तेरी आंचल की पनाह में। तेरे रंग नूर का जादू उभरता है हर दिन के उजाले से। तेरी आंखों का काजल लेकर आती है शाम सुकून अपने पहलू में। गुजरती है तेरी सांसों में मेरी जिंदगी ऐसे, जैसे बादे सबा को मिल गई हो मंजिल कोई। हम कुछ भी कहें तो कह नहीं पाएंगे, कहने से कभी दास्तानें पूरी नहीं होती। मैं वक्त होकर भी तेरे अनगिनत रूप को बयान नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि तेरी सबसे बड़ी ताकत तू खुद है। तेरा खुद पे भरोसा तेरी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि तू औरत है, क्योंकि तू औरत है, क्योंकि तू औरत है। थैंक यू। बाय द वे, यहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं आ रही और मैं ऐसी अंदाजे से ये नज़म तो पूरी कर लिया। Nat, you need to do something because I'm not able to see this. नहीं नहीं, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। No, he'll do that. Yeah, this is fine, this is fine. तो वो जो याद थी वो ठीक थी, मगर बीच में Thank you so very much. So, I hope you liked it, you enjoying the evening and the poem. Yes, great. Okay, the second poem, which is titled Badal, was commissioned a long time ago. It's a very popular nazm back home. A lot of people know about it, and you will have the answer as to why people become poets. लोग शायर क्यों बनते हैं, इसका जवाब है इस नज़म में। I was, or rather, is very fortunate to have been working with many artists, including Mr. A.R. Rahman. So the background track for this particular nazm has been composed by him. So this is the first poem in which Anaga would be performing along with me. So don't run this, just can we have the track? The title of this poem is Badal. Can we have the track, please? ये जाते हुए बादल मेरा पैगाम लेकर जाएंगे, ये जाते हुए बादल मेरा पैगाम लेकर जाएंगे, हवाओं में तेरी खुशबू होगी। हर अंग कली का खिल जाएगा, हर अंग कली का खिल जाएगा, इन फूलों पर तेरी जवानी होगी, इन फूलों पर तेरी जवानी होगी। ये दूर कहीं दर्द खड़े, दर्द ट्रीज को कहते हैं, ये दूर कहीं दर्द खड़े, ये खामोश चट्टानें, चिड़ियों की है चहचहाहट, खामोश वीराने।
ये दूर कहीं दर्द खड़े ये खामोश चट्टाने चिड़ियों की है चहचहाहट खामोश वीराने। सावन का खुला आंचल आंचल में फसाने, सावन का खुला आंचल आंचल में फसाने वो दूर निगाहों से बरसते तराने। मिट्टी की महक ऐसी अंग अंग में समा जाए, मिट्टी की महक ऐसी अंग अंग में समा जाए, भूले से नहीं भूले वो तेरे जमाने, भूले से नहीं भूले वो तेरे जमाने। पलकों में छुपी आग को फिर से जलाने, पलकों में छुपी आग को फिर से जलाने, आंखों में तेरे देखूं ख्वाबों के बहाने, सांसों में तेरी गुजरूं जीने के बहाने, जुल्फों की नमी तेरी करती है दीवाना, कैसे मैं ये भूलूं वो होंठ सुहाने, कैसे मैं ये भूलूं वो होंठ सुहाने। मैं बैठा गुमसुम ये सोच रहा हूं, मैं बैठा गुमसुम ये सोच रहा हूं कि एक तेरे न होने से क्या होता है। मैं यहाँ फूल रंग घटा खुशबू चांद और तारे, मैं यहाँ फूल रंग घटा खुशबू चांद और तारे, इन सब को मिलाए तेरी एक तस्वीर बनाए बैठा हूँ और तुझसे बातें करता हूँ। जाने क्यों लोग मुझे शायर कहते हैं, जाने क्यों लोग मुझे शायर कहते हैं। ये जाते हुए बादल मेरा पैगाम लेकर जाएंगे, ये जाते हुए बादल मेरा पैगाम लेकर जाएंगे। हवाओं में तेरी खुशबू होगी, हर अंग कली का खिल जाएगा। इन फूलों पर तेरी जवानी होगी, इन फूलों पर तेरी जवानी होगी। Thank you so very much. Thank you once again. ये जो नज़म है इसका टाइटल है बचपन। ये मेरा मानना है कि आदमी और इंसान में फ़र्क होता है। There is a difference between a man and a human. मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग जब बच्चे रहते हैं तो जब हम लोग इंसान रहते हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते हम आदमी में तब्दील हो जाते हैं। सो दिस ट्रांजिशन from human to a man is what is inside this नज़म बचपन। फ़र्ज़ कीजिए आप लोग आज के ये जब एक सेकंड के लिए ये मान लीजिए आपका बचपन एज एन एंटिटी आपके पास आता है और आपसे जब वो बातें करता है और वो जो सवाल पूछता है और आपको उसके जो जवाब देते हैं, सो वो कन्वर्सेशन मैंने कोशिश की है इस थॉट के साथ कि इंसान और आदमी में फ़र्क होता है। द पेंटिंग्स इस पर्टिकुलर नज़म में मिस्टर लक्ष्मा गौड की है। So let's have the nazam Bachpan.
इसको ज़रा गौर से सुनिएगा. कैन वी हैव द ट्रैक एंड द वीडियो? बात एक रात की है, सर्दी का था वो मौसम. यहाँ पे तो सर्दी का ही मौसम होता है ऑल द टाइम. बात एक रात की है, सर्दी का था वो मौसम, मुझसे मिलने के लिए आया था मेरा बचपन. देख के दूर से मुझको बड़ा हैरान था वो. देख के दूर से मुझको बड़ा हैरान था वो, अपने अंजाम से किस दर्जा परेशान था वो. अपने अंजाम से किस दर्जा परेशान था वो. उसकी बाहों को जहां प्यार से मैंने थामा, उसकी बाहों को जहां प्यार से मैंने थामा, उसने मासूम से अंदाज में ये पूछा मुझसे. तो क्या पूछ रहा है बचपन? क्यों खेलते नहीं हो तुम आंगन में आजकल? क्या तंग हो गया है वो आंगन भी आजकल? ये क्या कि आज माँ से भी डरते नहीं हो तुम? आंचल में उसके किस लिए छुपते नहीं हो तुम? तारे तुम्हारी आंखों में चुभने लगे हैं क्यों? चंदा की चांदनी से भी डरते नहीं हो तुम? गुड़ियों से अपने दिल को लुभाते नहीं हो तुम? परियों की अब कहानी सुनाते नहीं हो तुम? कोयल की कूकने पे नहीं देते तुम सदा? कोयल की कूकने पे नहीं देते तुम सदा? बादल के झूमने का नहीं तुमको कुछ मजा? कागज की कश्तियां भी बनाते नहीं हो तुम? कागज की कश्तियां भी बनाते नहीं हो तुम? मिट्टी के घरौंदे भी बसाते नहीं हो तुम? धरती की भीनी खुशबू का तुमको नहीं ख्याल? करते नहीं हो किस लिए हर बात पर सवाल? पानी भी आज पौधों को देते नहीं हो तुम? गुलशन में आज किस लिए आते नहीं हो तुम? फूलों से तितलियों से भी उल्फत नहीं रही? मासूमियत की कोई भी आदत नहीं रही? नगमे वफा के किस लिए गाते नहीं हो तुम? क्या बात है कि खुद को भी पाते नहीं हो तुम? क्या बात है कि खुद को भी पाते नहीं हो तुम? थर्राते हुए लब आंखों में पानी लेके, थर्राते हुए लब आंखों में पानी लेके, जाते जाते मेरा बचपन ये कह गया मुझसे, वक्त की आग में इस दर्जा पिघल जाओगे? वक्त की आग में इस दर्जा पिघल जाओगे? किसको मालूम था तुम इतने बदल जाओगे? किसको मालूम था तुम इतने बदल जाओगे? अब ये आलम है कि तन्हाई का सन्नाटा है. अब ये आलम है कि तन्हाई का सन्नाटा है. ऐसे आलम में मेरे दिल ने ये कहा मुझसे, अपने गुजरे हुए कल में कोई इंसान था मैं. अपने गुजरे हुए कल में कोई इंसान था मैं. बंदिशे वक्त की जंजीर से अनजान था मैं. अपने गुजरे हुए कल में ही इंसान था मैं. अपने गुजरे हुए कल में ही इंसान था मैं. थैंक यू सो मच. एक और नज़म है. As I said earlier कि we'll be using paintings of two artists. तो मैं नीता महेश्वरी जी की पेंटिंग इस नज़म में इस्तेमाल करूँगा. आई थिंक वो है नहीं यहाँ पर. इसका टाइटल है मेरी नज़र. तो हम बहुत फिलोसॉफिकल बातें कर रहे थे अब तक, तो विल also do one romantic poem. So can we have the track and the video please?
मेरी नज़र में देख लो वही नमी है आज भी। नमी आंखों जो वेट होती हैं, जब आंसू रहते हैं। मेरी नज़र में देख लो वही नमी है आज भी, नज़र में ख्वाब वहीं पर है। मेरी नज़र में देख लो वही नमी है आज भी, नज़र में ख्वाब वहीं पर है। तेरी कमी है आज भी। मेरी नज़र में देख लो वही नमी है आज भी। नज़र में ख्वाब वहीं पर है, तेरी कमी है आज भी। तेरे ख्याल की खुशबुएं जिस्म से लिपट के रह गईं। तेरे ख्याल की खुशबुएं जिस्म से लिपट के रह गईं। हजार लम्हों की एक खुशी सदियों की उम्र जी गई। तेरे ख्याल की खुशबुएं जिस्म से लिपट के रह गईं। हजार लम्हों की एक खुशी सदियों की उम्र जी गई। जिसे मिटा न सका वही कमी है आज भी। जिसे मिटा न सका वही कमी है आज भी। नज़र में ख्वाब वहीं पर है। नज़र में ख्वाब वहीं पर है, तेरी कमी है आज भी। मेरे इरादों को थामती तुम मेरे पास क्यों नहीं। मेरे इरादों को थामती तुम मेरे पास क्यों नहीं। मुझे दूर से पुकारती तुम मेरे साथ क्यों नहीं। मेरे इरादों को थामती तुम मेरे पास क्यों नहीं। मुझे दूर से पुकारती तुम मेरे साथ क्यों नहीं। पूरी न हो सके कभी वही कमी है आज भी। पूरी न हो सके कभी वही कमी है आज भी। नज़र में ख्वाब वहीं पर है। नज़र में ख्वाब वहीं पर है, तेरी कमी है आज भी। खामोश इस फिजा में बस तेरी ही याद आती है। खामोश इस फिजा में बस तेरी ही याद आती है। सुबह से शाम के लिए जैसे ये रात जागती है। खामोश इस फिजा में बस तेरी ही याद आती है। सुबह से शाम के लिए जैसे ये रात जागती है। जिसे छुपा न सका वही कमी है आज भी। जिसे छुपा न सका वही कमी है आज भी। नज़र में ख्वाब वहीं पर है। नज़र में ख्वाब वहीं पर है, तेरी कमी है आज भी। मेरी नज़र में देख लो वही नमी है आज भी। नज़र में ख्वाब वहीं पर है, तेरी कमी है आज भी। तेरी कमी है आज भी। थैंक यू। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, तो चलते हैं मोहब्बत की बातों से हटकर। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ह्यूमन बीइंग का, रिलेशनशिप्स, रिश्ते। तो ये नज़्म जिसका टाइटल है रिश्ते, तो प्रेम शर्मा जी जो यहाँ पे मौजूद है, एक ज़ोरदार ताली हो जाए प्रेम जी के लिए। यहाँ बैठे। उनकी पेंटिंग पे इस नज़्म को मैं पढ़ूँगा। Can we have the track and the video, please? ये रिश्ते हैं, ये रिश्ते हैं, ये रिश्ते हैं, ये रिश्ते हैं। सागर गहरा अंबर प्यासा, आंखों को एक आंख न भाता। किसको क्या समझाते हैं, ये रिश्ते हैं, ये रिश्ते हैं। सांसों की रफ्तार है इनमें, रिश्तों में सांसों की रफ्तार है इनमें। यादों की दीवार है इनमें। किसको कौन निभाते हैं, ये रिश्ते हैं, ये रिश्ते हैं। जंगल सहरा गुलशन बस्ती, जंगल सहरा गुलशन बस्ती। पर्दे पर हो तस्वीर जैसी,
सबको ये बहलाते हैं। ये रिश्ते हैं, ये रिश्ते हैं। रिश्ते और क्या करते हैं? गैरों की बाहों में पलते, गैरों की बाहों में पलते, अपनों को है दुख ये देते, पल में भूल भी जाते हैं। ये रिश्ते हैं, ये रिश्ते हैं। अब इसका इलाज क्या है? रिश्तों से मैं रिश्ता कर लूं, रिश्तों से मैं रिश्ता कर लूं, किसके बस में किसको कर लूं, सदियों के ये नाते हैं, ये रिश्ते हैं। उसकी आंखों से तुम देखो कैसे रिश्ते तुमने निभाए, उसकी आंखों से तुम देखो कैसे रिश्ते तुमने निभाए, क्या क्या सोचकर उसने भेजा, क्या गवा कर वापस आए। रिश्तों को अगर समझ सको फिर अपने को पहचान सको, ये रिश्ते हैं, ये रिश्ते हैं। सागर गहरा अंबर प्यासा, सागर गहरा अंबर प्यासा, आंखों को एक आंख न भाता, किसको क्या समझाते हैं। ये रिश्ते हैं, ये रिश्ते हैं। थैंक यू। Before I present the last poem of the evening, I once again thank NIAM and the team, and my friend Mushtaq Mahajir, who's done this rendition back home. He's been always very supportive. This poem, once again, Anaga would be performing along with me, जिसका टाइटल है एक शहज़ादी। ये एक्चुअली प्यार में उभरते जज्बात की एक कहानी है, लोगों को बहुत पसंद आती है। एक शहज़ादी। कैन वी हैव द ट्रैक प्लीज? एक शहजादी बावली बनकर झील के किनारे दिलाती थी, एक शहजादी बावली बनकर झील के किनारे दिलाती थी, मौसम का लिबास ओढ़े गीतों की डोली में आती थी, मौसम का लिबास ओढ़े गीतों की डोली में आती थी। एक शहजादी बावली बनकर झील के किनारे दिलाती थी। फूल शर्माते थे होंठों को देखकर, फूल शर्माते थे होंठों को देखकर, धूल किस्मत गुनगुनाती थी। जुल्फ बदलते थे कारवां बादलों के, आंखों से रात शर्माती थी। एक शहजादी बावली बनकर झील के किनारे दिलाती थी। बरसात का मौसम जब आया तो, बरसात का मौसम जब आया तो बूंदों का प्यार रुखसार पर, हवाएं इन बातों को दूर दूर तक ले जाती थी। एक शहजादी बावली बनकर झील के किनारे दिलाती थी। भीगी हुई जुल्फें लिए पलकों पर अरमा लिए, भीगी हुई
जुल्फें लिए पलकों पर अरमा लिए ये दूर दूर तक अपने निगाहों के तीर चलाती थी। एक शहजादी बावली बनकर झील के किनारे लाती थी। एक दिन शहजाद जब आया तो आंखों की चमक बढ़ने लगी। वीरां थे ये मौसम और बाग झील के किनारे वो सोचती थी। वीरां थे ये मौसम और बाग झील के किनारे वो सोचती थी। अब क्या मौसम ने बदले रंग, अब क्या मौसम ने बदले रंग और निखार आई बूंदों पर। चुपचाप कायनात हो जब इशारों में बातें होती थी। चुपचाप कायनात हो जब इशारों में बातें होती थी। एक शहजादी बावली बनकर झील के किनारे तलाती थी। एक रात चांद के माथे से अचानक रोशनी कम होने लगी। ऐसी मिसाल दी कि उसने के फूलों में आग होती थी। ऐसी मिसाल दी उसने के फूलों में आग होती थी। अपने ही होश से अजनबी छोड़ करके ज़माने को, अपने ही होश से अजनबी छोड़ करके ज़माने को, सहमी हुई वो आकर के आंसुओं से झील भरती थी। सहमी हुई वो आकर के आंसुओं से झील भरती थी। जब देखा ना गया तड़पते खुदा से, जब देखा ना गया तड़पते खुदा से, तो नाजिल उसकी रहमत हुई। शहजाद के ही दिल में शहजादी की रूह रहती थी। शहजाद के ही दिल में शहजादी की रूह रहती थी। ता क़यामत याद रहेगा ये अफसाना झील का। ता क़यामत याद रहेगा ये अफसाना झील का। फिर लोग हमेशा यही कहेंगे मोहब्बत में ताकत कितनी थी। फिर लोग हमेशा यही कहेंगे मोहब्बत में ताकत कितनी थी। एक शहजादी बावली बनकर झील के किनारे तलाती थी। मौसम का लिबास ओढ़े गीतों की डोली में आती थी। गीतों की डोली में आती थी। गीतों की डोली में आती थी। थैंक यू सो वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू सो मच। Wow, that was incredible. Let's give them one more round of applause. So stunning. And so now we have a special little opportunity. The artists have agreed to do a question and answer. So we'll take a few questions if you have any questions. This is a great opportunity to be in conversation with the artists. Yeah. So I have no questions for Anagha. So Anagha is a daughter I never had. I've seen her growing up from when she was a child to now. No questions for her. I have a question for Iqbal ji. Before coming, I basically Googled you. And I watched your TEDx, I think it was high tech. I watched you did 3 poems there. Yeah, at the TEDx show, correct. Yeah, Yes. one was Bachpan. Yes, of course. So I'm curious, how and when did you decided to basically meld these art forms together, the different art forms? This is very innovative. I've never seen this before. Yeah, as I do not have the knowledge of Urdu, the language. I don't know how to read and write. And there was this gentleman, a very profound poet from Hyderabad, under whom I was trained. And till the time he was there, I think about 4 to 5 years I was training under him. So he taught me the parameters of writing, actually.
And then after he passed away, I had no other opportunity and I wanted to take this, poetry. I wanted to bring it to all the people, basically, because the Thet Urdu poetry is lost somewhere. So since I don't write in that, heavy language, I wanted an opportunity to showcase this entire thing. So suddenly, this idea came about of fusing it with, art form, with paintings first. So there was this gallery, and we did an experiment there. In that show, Mr. Lakshma God came. He's a very, very renowned and a very great artist. So he saw me, and then the next thing was I was doing the entire series with him, followed by Kala Ghoda Festival, all art festival. It just kept on going. Okay. So it's just one step I took, and then the rest was, everything was coming to me. So that's how this whole thing started. And then fusion with dance happened when, we have Manjari Chaturvedi, who is a very renowned Sufi Kathak exponent from India. So she collaborated with me, and then fashion I did for Wendell Rodriguez and all of them. And we have a local great talent in Hyderabad, Gaurang Shah. So we did Lakme Fashion India Week. So this was just, it started and is going on and on and on. Wonderful. Thank you. Thank you. Yes, sir. First of all, I want to thank you. A wonderful audio visual treat this evening, Thank you, sir. complemented by such an artistic dance, representing poetry in the dance form. I think I want to compliment on that. Thank you, sir. I just have one question. Where does the inspiration comes first from the subject, or the poetry comes and then you put it? My example is this: you have seen the paintings, you have done that. So the painting inspired you, or you had a poetry and you found the paintings to complement that. Yes, sir. It happens both ways. Either you write for a subject, or if I see a subject, then I choose one of my poems. It happens both ways. So creativity is not, it's infinite. So it can happen when I'm sitting with, a crowd, I can come up with a line. Or I may not write for months together. So it all depends on the mood and the feel and all. But painting and poetry, sometimes I look at a painting and I immediately know that this poem will work. But then there are times when I was commissioned to write on a subject. Like we did a show where the subject was weavers. India is very rich in its culture and tradition. So we have so many cities which has their own weaving and patterns and all that. So for weavers, there was not a single poem. And the last, when we did our research, I found about 5 lines written by Sarojini Naiduji way back, I don't know, whenever, in English. But we don't have a poem especially for weaver as to what he thinks and what he feels and all. So it happens both ways. Thank you. Yeah, babe. I have a question for Anaga. And when you were first called upon to work on this collaboration with Iqbalji, what was going on in your mind, and what was it that you were thinking that it's such an opportunity? Share your feelings with us. Sure. Well, so I think the first thought that I had is, to me, dance is a language, and it's a language like any other. And as a dancer, my job is to make poetry with the language that I have. And so this was such an exciting opportunity to take really beautiful verse that had already existed and translate it. So to me, I saw this not as an exercise in creating art, but in an exercise of translation. How do I take something that is already so beautiful and so rich and so filled with meaning and translate it to a language that to me is my mother tongue, or as close to my mother tongue as it can be? So Anaga, you were born and raised here? Or? I was born in India,
Raised here. So I've been here in the Chicago area since I was about 5. So our 2 daughters have done dancing, and I was always amazed at how, in spite of being born and raised here, how you guys catch up the meaning of the words. And that was my question. This is hardcore Urdu. Many of us, Is it hardcore Urdu? No. I thought I write very simply. Yeah, okay. and you have to understand the meaning of it and give the right mudra or whatever, So that's my question. Do you Google the words and? My mother helped me translate. So in dancing for so many years, I didn't grow up speaking Hindi or Urdu. But you learn the flavor and the emotion and the mood just by doing so many of these. And line by line translation is always really helpful. But to me, that's the starting place. It's not the end. And once you have what the words mean, then it's a question of, okay, what's the narrative? What's the emotion? What is the intent behind the words? And really drilling down and capturing that. Any connection with the pattern, Patni weavers, any connection with that? No. Weavers was purely by Gaurang Shah. He deals with extensively with the weavers of India, South India especially. So this was the National Day of Handloom, 5th of August. It happens every 5th of August in India. So it was a government program. So that's where, and he only makes, his fashion is from the weavers only. We make them also. That has to be highlighted. And while doing the research, I was amazed that there was not a single line written about this aspect of India. Not a question though, but I believe what my point is. So what I understood, these are like 3 different individuals, including Chrissy, yourself, and then, so you guys, all the practices, the rehearsal, whatever you have done, there are 3 different locations. You guys put it so well. So let's give it up for them. That's the magic. That's the magic. One of the few good things to come out of the pandemic. You learn what you can do when you don't have to be in the same room. Well, keep up the good work. Thank you so very much. Thank you. I'm so pleased to see all of you here, and I just wanted to sort of repeat myself a little bit that if you like this program, you want more unique stuff like this, keep us in mind. Please share your pictures, videos on social media, email, whichever platform you use, and tell everybody about us. This is the only way we will grow. We are the National Indo-American Museum, so we just don't want to grow in Chicago. We want to grow across the nation. So do keep that in mind. Tell your relatives who don't live here, tell your friends who don't live here about us. And thank you very much for coming.